So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about a very recent bill, that is 130th Constitutional Amendment Bill. And I'm sure you must be aware it was very much in the news. So am I audible and visible? तो बेसिकली आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इस पर काफी पार्लियामेंट में हंगामा भी हुआ सो अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट हैपन इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग दिस आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट so is my slide visible? I think it is not visible. अब visible है, right? Slide is visible? I think now it should be visible. है ना? So basically this was in the news. Yes, now it's fine. Huh? So basically marshals deployed, torn copies flung and MPs come to near blows at as 130 amendment bill introduced in Lok Sabha. ये आपने देखा था recent news में जैसे कागजों को उछाल दिया गया था something papers or something like that. ठीक है, marshals deployed, torn copies flung, MPs come near blows. मतलब near blows यानी कि लड़ाई तो नहीं हुई लेकिन it was something like that. मतलब हाँ. So there was no official fight technically, but yes, papers were thrown on each other. Please make a video on US EU FTA. अच्छा ठीक है, Riva. I will think of it on it if I'll get a chance. Okay. So let us. Now we are going to discuss why 130th Amendment Bill. What is 130th Amendment Bill? What are the provisions? And why opposition is opposing, and these are the things. What are the positives and negatives with regards to this 130th Amendment Bill, and how it is going to change or amend the Constitution. So this is a constitutional amendment bill. So which article of the Indian Constitution does constitutional amendment? Please tell me. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी आर्टिकल करती है बताइए? Anyone? Yes, the right answer is Article 368. Yes, Adrija, you're right. So Article 368 does constitutional amendment. Okay. Now, this is a very interesting question because this is actually a PYQ of ALET had asked this type of question 1 or 2 years back. 2-3 years back, I think. Okay. 368 amendment hota hai. Okay. You should be knowing. Not 369. Okay. How many constitutional amendments have been done so far? अब तक कितना संविधान संशोधन हुआ है? Please tell me. And what was that? ठीक है, recent amendments हम लोग discuss कर लेंगे. 106, yes. Dhruv, Adrija, and Krishi Sachdeva, you all right. D is the right answer. Nandini Chaudhary, you're also right. ठीक है. So the last one was 106th amendment that provided reservation of 1/3 seats in Lok Sabha and state legislature and Delhi Legislative Assembly to women for a period of 15 years. But of course, this will be implemented once the new census will come and once the delimitation is done. तो अभी इसको implement नहीं किया गया. That is what you should be knowing about. Now, all the important amendments I have done already. So just go to the YouTube and search this Constitutional Amendments Career Launcher. You will get this video where I have explained all the important constitutional amendments. Important ones, of course, pura all 106 cannot be discussed. So the important ones I have discussed here, which is important, of course, because from exam point of view, sometimes they ask. ठीक है, so the last one था वो था 106th amendment of the Indian Constitution. So this was an 106th Amendment Act. And bill कौन सा था? Constitutional Amendment Act was there. So it was which bill? बताइए कौन सा बिल था ये?
So it was 128th Amendment Bill. Here it is written, 128th Amendment Bill. Okay. Yes, Women's Reservation Bill, right? 128th Amendment Bill था ये, और it became 106th Act. It means there are 22 bills which has not become act. So bill or act समझते हो ना? Bill is actually a proposal which is initiated in either of the two house by a minister or can by a private member also, a non-minister also. Okay, if it becomes an act after being passed in Lok Sabha, Raj Sabha and approved by the president, it is called as act. So 128th Amendment Bill, okay, became 106th Amendment Act, which talked about giving 33% reservation of seats to Lok Sabha, State Legislative Assembly and Delhi Legislative Assembly for women. Okay, that is what you should be knowing about. Now let's talk about the next question. The next question is, what was 129th Amendment Bill? जिस इसलिए कि अभी जो recently है जिस पर काफी protest हंगामा हुआ, that is 138. So what was 129th Amendment Bill? It means it is yet to be passed. है ना? What is that? Someone is saying वक्फ तो पास हो गया ना? 129th Amendment Bill is related with what? One nation, one election, GST amendment, National Commission for Scheduled Class to be added in the Constitution, NJAC. NJAC क्या होता है? What is NJAC? National Judicial Appointment Commission. Appointment Commission. Yes, the right answer is one nation, one election. A is the right answer. Yes, Dhruv, Sneha, Nandini, Adrija, you all are right. So A is the right answer to this question. Okay. So 129th Amendment Bill talks about conducting elections for Lok Sabha and all state legislative assembly together. Simultaneous election, इसी को one nation, one election कहते हैं. ठीक है. Okay, so that is 129th Amendment Bill. Last one is option D, National Judicial Appointment Commission. Yes, struck down by the Supreme Court in 4 judges case. Good. Krishi Sachdeva, great. Huh? Make a video on Naxalwadi and recent operations. अच्छा हाँ, इस पर बना सकता हूँ, देखता हूँ मैं. ठीक है. Okay. मैंने नोट कर लिया. Okay. So basically, इस क्लास में please watch this class. Here I have discussed about National Judicial Appointment Commission, Collegium, 4 judges case, etc. How the judges are appointed. ठीक है. So ये देख लीजिएगा. Okay, so 106th Amendment talked about giving 33% or 1/3 seats to women. Then 105th जो था ये इतना important नहीं, मतलब ये this is actually to reverse the Supreme Court judgment. 104th Amendment was actually extending the SC/ST reservation in Lok Sabha and State Legislative Assembly for 10 more years and cancelling Anglo-Indians. So 543 plus 2 मिलता था ना Anglo-Indians का. So this was not extended in January 2020. ठीक है. That is what you should know. Okay, so there is no provision of Anglo-Indian in Lok Sabha now. But SC/ST reservation, so SC/ST reservation is there in Lok Sabha, not in Raj Sabha. Similarly, only in Legislative Assembly, not in Legislative Council. ये वो छोटी सी चीज है. This is a very small thing, but you should know it. Okay, this you have to be very crystal clear about that. Then 103rd Amendment, 10% EWS reservation, ये आपने जानते ही होंगे. Yes, and it was challenged in the Supreme Court, and the Supreme Court upheld it 3-2. वो कौन सा केस था? जनहित अभियान केस था ना. What is the name of the judgment? जनहित अभियान case. Yes, जनहित अभियान versus Union of India. Why I'm telling you, because ये sample paper question था 2 years back. CLAT की sample paper में. What is the name of the judgment? जनहित अभियान versus Union of India. Take a case. Then 102nd Amendment gave National Commission for Backward Class as constitutional status, added in 338 capital B. Before that, it was a statutory body. Okay? Or 101st Amendment introduced the concept of GST. This is also very important. Okay? So 1st July is celebrated as GST Day. Okay?
और इससे पहले एक दो और मैं बता देता हूं, जस्ट हैव एन आइडिया। 100th अमेंडमेंट था, वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था विद बांग्लादेश। अभी मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल देख रहा था, आई थिंक द हिंदू में था ना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 10 years रफली। तो उसमें एक आर्टिकल था, आई थिंक यू माइट हैव सीन इट, that 10 years of land boundary agreement with Bangladesh. So that was 100th amendment. और 99th amendment क्या था? वो था NJAC, National Judicial Appointment Commission. And this is also very important, 99th amendment, NJAC. ठीक है? That is what you should be knowing. Okay. हाँ, देखो क्या लिखा हुआ, I've shown. So 100th amendment was land boundary agreement with Bangladesh, LBA, है ना? And 99th amendment was about NJAC. ठीक है, इतना याद रख लोगे तो काफी है, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ वी आर नॉट गोइंग मच इन डिटेल, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं जानना है। नाउ अब चलते हैं 130th अमेंडमेंट बिल। व्हाई दिस बिल इज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाई एक्चुअली व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इट एंड व्हाई देयर हैज बीन आउटरीच। ठीक है, तो आपने देखा होगा, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली बाय मिस्टर अमित शाह, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्लीज, दिस इज द क्वेश्चन and you have to answer it. There are two fill in the blanks and I have not given the options, although in the examination hall option will be given. So what was in the land boundary agreement? ये वाला पूछ रहे हो। एक्सचेंज किया गया था enclaves and adverse possession को। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, उसके लिए सेपरेट क्लास चाहिए थोड़ा डिटेल में जानने के लिए। कुछ आप समझो बॉर्डर डिस्प्यूट्स था, उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक था, उसको सॉल्व करने के लिए था, लाइक दैट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इफ यू कैन आंसर, बिकॉज दैट द क्रक्स ऑफ 138th अमेंडमेंट। I am waiting for the response of at least multiple. Yes, Neha, you are very near to the answer. Riva, yes, you are right. हाँ, good. Rishi says they were right. हाँ. A minister, यही लिखा हुआ 130th amendment में, a minister who for any period of 30 consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody on allegation of committing an offense under the law, which is punishable with an imprisonment of 5 years, shall be removed from the office by the president or the advice of chief minister on the 31st day. ठीक है, 5 years and 31st day. अब देखो इसमें कीवर्ड समझना है। A person has been arrested in custody on allegation. Please tell me, has the person been found guilty in this case or the matter is still pending in the court? पहले ये बताओ, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? क्या ये इस तरह इशारा कर रहा है कि वो अदालत में सजा हो गई है या अभी मैटर अंडर ट्रायल है? कौन सा वाली बात सही है? विच वर्ड इज करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट? हाँ, नो, मतलब ये कि अंडर ट्रायल है ये। मतलब एक मान लो मिनिस्टर है, लेट्स से देयर इज अ मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। इट कैन बी एट स्टेट लेवल और एट द सेंट्रल लेवल, कोई भी मंत्री हो सकते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी हो सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी। उन पर इल्जाम लगा है क्राइम करने का, कोई भी करप्शन है जो, और वो क्राइम की सजा कम से कम 5 साल होनी चाहिए, तब ये वाली चीज लागू होगी। ओके, द मिनिस्टर इज अंडर ट्रायल, देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, द पनिशमेंट ऑफ विच इज 5 years if he or she is found guilty, then only we will apply this. ठीक है, पहली चीज ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है वो, कृषि सचदेवा, दैट्स अ डिफरेंट वे। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब है कि वो तो दूसरी चीज होगी। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल अरेस्ट, नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो बेसिकली under trial, a person has been arrested, there is an allegation against him or her, he or she is a minister, it can be a state minister or a central minister. ठीक है, and the allegation is such a grave that if he or she is found guilty, there will be minimum punishment of 5 years. In that case, if he remains in jail for 30 days, मतलब क्या हुआ कि within 30 days the judiciary has not given him or her bail,
जुडिशरी ने बेल नहीं दिया अभी तक, 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जुडिशरी ने बेल नहीं दिया, तो 31st डे that person will be removed by the president. And if the president does not remove it, or if he is supposed to be resigned, otherwise he will be removed. But the bottom line is that 31st day he will lose his minister post. So minister मतलब सब हो जाएगा. A minister at the state government level, he or she can be a chief minister, minister at the central level, or even a prime minister. सब इसमें आ जा रहा है. ठीक है, I'll discuss it in further detail. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? प्रिवेंटिव डिटेंशन कृषि सचदेवा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो तब होता है जब पर्सन हैज नॉट इवन कमिटेड अ क्राइम. ठीक है, एंड द पुलिस बिलीव्स दैट ही माइट कमिट अ क्राइम इन फ्यूचर एंड दैट इज पर्सन इज अरेस्टेड, दैट्स कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, बट दिस इज अ नॉर्मल अरेस्ट. ये क्लियर हुआ पहले? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. We will discuss both the aspects and what is the current aspect of current law regarding removal of ministers if they are found guilty. ये बात समझ में आई कि नहीं पहले? This is very important. Yes or no? दो तीन कीवर्ड है. पहला है अंडर ट्रायल, यानी कन्विक्टेड की बात नहीं हो रही है, बिकॉज कन्विक्टेड के लिए वी हैव ऑलरेडी अ लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यानी द पर्सन इज येट टू बी प्रूवन गिल्टी इन द कोर्ट, प्लस 30 days इन जेल. मतलब ये क्या कि 30 days के अंदर अंदर बेल नहीं ले पाया. बेल वाज नॉट ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट, वेदर इट्स लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से उस मिनिस्टर को, उस पर्सन को बेल नहीं मिल पाया. देन 31st day he or she will no more be the chief minister, minister, prime minister, etc. ठीक है, okay, that is what. So now यही लिखा हुआ इसमें है ना, says that any minister who has been in jail for 30 days for a serious offense will lose his post. Okay, it is arrested and detained करके punishable with imprisonment 5 years. ठीक है, और 31st day उनको रिमूव कर दिया जाएगा. ये अपने आप रिमूव हो जाएंगे. Now please tell me 138 amendment bill amends which article of the constitution? 75, 191, 211, 368. हाँ, आर्टिकल 175, 75, 164 और 239 AA. This is related with central government. 164 स्टेट मिनिस्टर से रिलेटेड है, एंड 239 AA दिल्ली, उसको अलग से बना दिया गया. सो राइट आंसर इज ए. ठीक है, सो नाउ रीड इट. इट सेज, है ना, आर्टिकल 75 इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल आल्सो सेज, है ना, 31st दिन को रिमूव कर दिया जाएगा. हाँ, बट इफ अ पर्सन हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, theoretically it is possible that he or she can again become the chief minister or minister. अगर बेल मिल गया, if let's say, जैसे for example, the person is a chief minister or a minister in some state, the person is arrested, 30 days he or she has not got the bail, 31st day he is no more the minister. ठीक है, now let's say after 10 days, after 40 days he got the bail, so 41st day he will come out and he will again take the oath and become a minister, even if the matter is pending, because the matter he or she is under trial. इसकी बात हो रही. Is it clear? It means it has been 2 times amended. नहीं, मतलब वो मतलब नहीं होता है कृषि सचदेवा. We will discuss it in some other class. अभी we will get diverted. हाँ, ये पॉइंट नहीं समझे. देखो इसमें क्या कहा जा रहा. मान लो कोई आदमी है, let's say the person is a CM of some state. ठीक है, let's say he is arrested by ED. ED ने इनको अरेस्ट कर लिया, जेल चले गए किसी मामले में, for example, and now this chief minister is in jail and CM has said I will not resign, like it happened in case of Mr. Kejriwal. आपने सुना होगा. He was arrested by the ED, but he had said that I will run my government from the jail, because there is no provision of removing the person from the CM post because he was not found guilty, he was under trial. अगर जब कन्विक्टेड होते तब आप सीएम को हटा सकते हो या मिनिस्टर को. ठीक है, ओके. Now here we are talking about a person who has been arrested. The matter is still pending, so under trial, but he wants to take a bail.
लेकिन वो जेल के अंदर रह गया, मान लो 40 डेज तक जेल के अंदर रह गया. ओके, इफ देयर वाज नो 130th अमेंडमेंट, इन दैट केस क्या होगा? वो जेल से सीएम रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, लाइक व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ मिस्टर केजरीवाल कि यस you have been arrested but I have not proven guilty in the court, so I will be inside the jail, I will be chief minister, I will pass an order from the jail. Okay, लेकिन अब after 130th amendment, if this bill is passed, then after 30 days, if you cannot get bail from anywhere, whether it's lower court, high court or supreme court, आपको bail नहीं मिला, तो next day on 31st day you are no more the chief minister, automatically you are gone. ठीक है? So now someone else will be appointed as the chief minister in Delhi for the next 10 days. मान लो 41st day, assume it on 41st day, Mr. Kejriwal got a bail. I'm just giving example, or any chief minister, he has got a bail. Now he has got a bail, still he is an under trial, but still he can again be appointed as the CM of Delhi. Is it clear? ये बात क्लियर हो कि नहीं? जैसे ही आप जेल से बाहर आओगे, अगर आपको बेल मिल गया, किसी भी अदालत ने बेल दिल दिया, तो आप फिर वापस आकर के फिर वो मिनिस्टर पोस्ट मिल सकता है, इसलिए कि मैटर इज पेंडिंग. इज इट क्लियर? यस और नो? यही इसका जरा, इज इट क्लियर? यस और नो? आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंपल वे that if a minister is arrested, he is in jail for 30 days. After on the 31st day, if he has not got the bail, he will lose the minister post. But let's say after 2 months, 3 months, he got the bail. Now he comes out and again he can become a minister, even if the matter is pending, because the matter is under trial. ठीक है, तो वापस आगे फिर से मंत्री बन सकते हैं, because उसके लिए prohibition नहीं है, unless until you are convicted. Convicted के लिए we will discuss. Convicted means you are found guilty in the court. Okay, I think it's clear. So यही लिखा है 130th amendment bill, and is accused of an offense punishable with minimum 5 years punishment, and he has been detained in custody for 30 days. तो उसमें you will be removed on 31st day. You can be a minister, chief minister, state minister, central minister also. Then नहीं, president rule नहीं लगेगा. Oh, you got it. Let's take this example. If Mr. Arvind Kejriwal was arrested, and if this rule was implemented कि okay, within 30 days you will lose the post, कोई बात नहीं, Mr. Kejriwal will not be the chief minister, someone else from Aam Aadmi Party will become the CM. President rule में तो पूरी legislative assembly उड़ा दी जाती है, तो खत्म हो जाती है. Here that person who is the chief minister will no more be the chief minister. So someone else from the same ruling political party should be elected. ठीक है, समझ गया ना? जैसे when Mr. Hemant Soren was arrested, was supposed to be arrested in Jharkhand, he resigned. हाँ, तो पहले उन्होंने रिजाइन किया, तब जाके वो अरेस्ट हुए. तो उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, लेकिन मिस्टर केजरीवाल डिड नॉट रिजाइन. He said, I will run from the Delhi, from the jail. But if 130th amendment bill is passed, now this type of thing cannot happen. Within 30 days, you will automatically lose the post. That is what this 130th amendment bill says. Is it clear? ये concept clear है कि नहीं? And the thing is, both are still under trial. अभी अदालत में फैसला नहीं आया अभी, the matter is still pending. वो सिर्फ bail लेने की बात हो रही थी. That is about taking bail, right? Okay, I think it's clear. Now this is 130th amendment bill. अब मैं original bill ही दिखाता हूँ आपको. And 130 says in Article 75 5A added. देखो क्या है. Generally क्या होता है? Article 75 says, ये पढ़ो, 5th वाला क्या लिखा है? That even if you can become a minister, even without being an MP or a prime minister, without being a member of parliament for at least 6 months. Danish Ruparil, we will come to that. Conviction पर तभी हम लोग आएंगे. That's why I said today's class is important. Conceptually, उस पर हम लोग आ रहे हैं अभी. ठीक है, we are coming to that. इसके बाद 5A देखो कहाँ पे ऐड किया गया. 5 capital A is inserted. मतलब यहाँ पर एक section insert किया जाएगा, यहाँ somewhere here. 5 capital A. Article 75 clause 5 capital E. यहाँ पर एक line insert की जा रही है. Here. Okay. So what is they are inserting it and they are saying this. If you are being arrested for 30 days and you have not got the bail, so after the 31st day, even if you are a minister, you will no more be a minister. है ना? मतलब वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे,
let's say when we are talking at the case of center level, 75 is center level. So Prime Minister will advise, okay, 31st day has happened, please remove the president. Please, Mr. President, please remove the person from the being a minister. But even if the Prime Minister does not advise, still the person will be removed. अगर Prime Minister ने advice नहीं भी दी, तो भी वो 31st day remove मान लिए जाएंगे. That's the idea. है ना? Yeah, ideally he should resign. But the bottom line ये कि 31st day he will no more be able the minister. आप चाहो पढ़ लेना इसको. Similar is the case at state level. 164 clause 4A है ना? 164 4 वाला यहाँ minister वही 6 months वाला. After that इसके next वाली line होगी 4 capital A. Right? है ना? So article 164 clause 4 says that for this at least for the next 6 months. And if you are not if you have become a minister, then at least for the next 6 months you can become a minister. Within 6 months you have to become an MLA or MLC. है ना? Now 164 clause 4A वही वाली बात हो रही है 31st day वाली कि CM should advise for the removal to the governor. हाँ, but even if the it does not advise, still the minister stands removed. ठीक है? That is what the idea is, है ना? इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज है, मैंने आपको explain कर दिया. So the idea is 31st day the person is gone. If the person has not got the bail, उस 30 दिन के अंदर अगर उनको बेल नहीं मिल पाया किसी भी कारण, तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है? Similarly 239 AA which is related with Delhi. Okay? इसमें भी same, again the same statement is there. ठीक है? So I hope the concept is clear. Now what are the issues raised? The first thing is इसमें जो मेन इशू होता है वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का. अ पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. मैंने दोनों एस्पेक्ट बताया था. देखो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट. वन इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड अदर इज पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. आपने सुना होगा. There are two aspects of this bill. First is criminalization of politics. देखो होता क्या है generally, and actually it is linked with what we call it as very slow judicial process. Slow judicial criminal justice system कह सकते हैं. Now what exactly it is? पहले आप ऐसे समझो. For example, if there is a minister, मान ली कोई MLA है, and he or she is very powerful, let's say. He has committed some crime. मालिश ने मर्डर कर दिया. एग्जाम्पल बता रहा हूं. Now इस MLA पे केस चल रहा है 15-20 साल तक. Okay, मैं बता रहा हूं. Yes, Krishi Sachdeva, we are coming to that. If a MLA has committed a murder, there is an allegation that he has committed a murder. तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी? इमीडिएटली अरेस्ट करती है और रिक्वेस्ट करती है जज को कि आप 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में भेजिए या पुलिस कस्टडी में. क्यों 14 डेज के लिए मांगती है? ताकि उस 14 डेज में एमएलए जो है ना वो सबूत नहीं मिटा सके और एनी अदर पर्सन, राइट? नाउ वंस द एमएलए कम्स आउट, आइडियली द केस शुड बी इनिशिएटेड वेरी फास्ट एंड ही और शी शुड बी प्रूवन गिल्टी. अगर इसने मर्डर किया, मान लो सही में मर्डर किया, तो कोर्ट केस फास्ट चले, लेकिन 15-20 साल तक केस चलता है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि एमएलए सेज कि आई एम अज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सो इट रिक्वेस्ट फॉर द बेल कि आप हमको 14 दिन बाद बेल दे दीजिए. So generally the judiciary give bail. उसके बाद if MLA is very powerful, he will suppress all those documents. He will pressurize the police, है ना? Or let's say he will bribe the judges, or maybe he or she can do anything. He can threaten the eyewitness. इसके पास बहुत पावर है. जब 15-20 साल तक मामला होता है, तब तक ये बंदा प्रमोट होते हैं, MLA, minister, that person gets promoted. The problem is here because of slow judicial system, and he says this. कि जब तक आप हमको अदालत में प्रूफ नहीं करोगे मैं क्रिमिनल नहीं हूं, तो 15-20 साल तक केस चलता है. सो दैट इज वन प्रॉब्लम थिंग. सो इसका सजेशन सम पीपल, इवन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर एक्सपर्ट्स, मेनी अदर कमिटीज हैव सेड कि इफ देयर इज अ हीनियस क्राइम और FIR is registered for a heinous crime, then the moment the FIR is registered, the MLA should be disqualified. ऐसा कुछ लोगों ने राय दिया. Some people have given that advice, although it is not being implemented today. ठीक है.
तो जो अभी जो 138 अमेंडमेंट बिल आ रहा था वो इसी के लिए आ रहा था कि 30 डेज वाला, कि ओके इफ द जुडिशियरी इज नॉट गिविंग यू बिल इन द नेक्स्ट 30 डेज इट मींस देयर माइट बी सम केस अगेंस्ट यू, इसलिए शायद नहीं दे रही हो, सो ऑफ कोर्स यू विल स्टैंड रिमूव्ड एटसेट्रा। बट उसका जो दूसरा है वो यही है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इफ यू हैव रिमूव्ड द चीफ मिनिस्टर इट इज अ पनिशमेंट। A chief minister is arrested for 30 days and 31st day let's say he could not get the bail. So if you have removed the chief minister, so you have given you have almost given a sort of punishment. अब ये proof भी नहीं हुआ उनको, that is the thing, ठीक है। The second thing which actually is put by opposition is कि maybe it will be used selectively to target the opposition, something like that. तो ये सब बातें दोनों एस्पेक्ट की, ठीक है। तो अरेस्ट इमीडिएटली क्यों किया? तो कोई बंदा क्राइम करता था फौरन पुलिस अरेस्ट करती है, ये पूछो ना, और जुडिशरी के पास भेजती है और जुडिशरी कहती है कम से कम 48 डेज के लिए आप हमको कस्टडी दीजिए। क्यों? बिकॉज अगर जब some person has committed a crime, so 14 days अगर वो जेल में रहेगा so he will not be able to suppress the evidence, ठीक है ना। तब तक जब तक उतना देर में पुलिस जो है वो सबूत इकट्ठा करती है, इसलिए अरेस्ट मांगती है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी जनरली 14 डेज के बाद जनरली बेल दे देती है, बट इन सम केसेस इट एक्सटेंड्स द बेल, इट एक्सटेंड्स द अरेस्ट। इज इट क्लियर? सो दो तरीके कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, बट आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट? इज इट क्लियर? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब हम बात करते हैं कन्विक्शन की। समवन वाज सेइंग ना कि सर अगर कन्विक्शन का क्या मामला है? The current provision regarding disqualification of MP or minister if found convicted is mentioned where? वो कहां मेंशन है? इस पर काफी मिस्टर राहुल गांधी वाज डिस्क्वालिफाइड 2 years बैक, काफी न्यूज में था वो। यस, सेक्शन 8 क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। यस, I'll tell you, देखो क्या है कि when you read 102 it talks about disqualification of MPs, member of a parliament, and 191 talks about disqualification of MLAs or MLCs at state level. इसमें क्या लिखा है? 102 में लिखा है one provision is if parliament has made any law, है ना, if parliament has made any law and talks about disqualification, yes, parliament ने law बनाया representation of people's act 1951, okay. Section 8 talks about a disqualification on conviction for certain offenses. Conviction means ये अंडर ट्रायल है कि नहीं है? नहीं, अंडर ट्रायल नहीं है, प्रूवन गिल्टी अदालत में, इवन इफ द लोअर जुडिशरी फाइंड्स पर्सन गिल्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ एमपी, मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा, कोई भी हो, if the person is convicted, found guilty in the court, even in the lower court, under this, देखो सब ग्रेव ऑफेंस के अंदर 498 है ना, अब तो खाली आईपीसी खत्म हो गया, बट द आइडिया आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, और वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, यूएपीए और फेमा, एनडीपीएस, नार्कोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, टाडा, ओके, बहुत सारे लॉज आप देख सकते हो, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट, सती, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ओके, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, एंड सो मेनी लॉज। अगर ये सब में है प्लस ये सब तो हो ही गया, so of course the moment you will be found guilty in any of these cases, found guilty with the convicted, you will be immediately removed if you are a minister, MP, CM, etc. plus कोई और अदर केस, any other case where you are proven guilty and the jail term is at least 2 years, ठीक है, ओके। और यहां पे देखो लिखा 6 years वाला, मैं बताता हूं। अब आप मान लीजिए जेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एमपी, द कोर्ट फाइंड्स यू दैट यू हैव बीन फाउंड गिल्टी फॉर 2 years जेल, और आप जेल चलेगा। So let's say the person is in jail from 2024 to 2026. I'm just giving example. So the person comes out in 2026. Still for the next 6 years, he or she cannot fight election. मतलब 2032 के बाद he or she will fight election. Is it clear? एक तो पूरा ऊपर वाले में कोई एक में भी आप फाइंड गिल्टी हो जाओ,
if a person has been found guilty, so punishment के बाद 6 years और otherwise in general, ये वाला याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. If an MP is found guilty, the punishment of which, again guilty यानी convicted हो गया है, I'm not saying under trial, and the jail term is minimum 2 years, then the person will be sent to jail. जो भी होगा, immediately that person will be disqualified. And even if after the jail he or she comes out of jail, for the next 6 years he cannot fight election. 2 साल सजा काटने के बाद ही वापस आएंगे, उसके बाद 6 साल और के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं, यानी 6 + 2 8 साल बाद. Is it clear? So yes, the same thing happened. What happened was, Mr. Rahul Gandhi, there was an allegation of criminal defamation against him. Criminal defamation में maximum punishment 2 years होती है, maximum. Okay, so the matter went. If the less is 2.5, तब नहीं होगा. Danish, if the punishment is less than 2 years, you will not be immediately disqualified, even if you are proven convicted. Okay. So maximum criminal defamation 2 years था, पूरा सूरत का कोर्ट ने वही सुना दिया. So he was immediately disqualified. Okay. The maximum punishment in defamation was 2 years, and he was given 2 years jail, and that's why he was immediately disqualified under Section 8, Clause 3 of Representation of People's Act. Okay. Then the matter went to the Supreme Court. Later on, Supreme Court suspended his order, sentence, and that's why he got his seat back. ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? So again, ये पूरा मामला क्या चीज से रिलेटेड है? कन्विक्शन से. It is not, we are not talking about under trial. ठीक है? फिर एक और चीज है, ये सेक्शन 8 क्लॉज 4, ये सभी न्यूज में चल रहा था. This was struck down by the Supreme Court in Lily Thomas case, very famous, 2013. ठीक है? वो सेक्शन 8 क्लॉज 3 के बाद था, एंड देखो ये सब भी न्यूज में था. ठीक है? इवन when we were talking about 138 amendment bill, still it was in the news. इसमें क्या होता था ना कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर फाउंड गिल्टी इन सेक्शन 8 क्लॉज 3, आप एमपी हो, ठीक है, और एमएलए हो, यू आर प्रूवन गिल्टी एंड द जेल टर्म इज मोर देन 2 years, एंड द लोअर जुडिशरी फाइंड्स यू गिल्टी. मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, मान लीजिए सेशन कोर्ट से आपको मिल गया 2 साल की सजा. आई एम जस्ट गिव एग्जांपल. Now, if you are a sitting MP or MLA, you were given some provision, like I think 3 months का time मिलता था कि okay, you will not be immediately disqualified. You file an appeal in the High Court, and if your sentence is stayed, fine. If the High Court stays your sentence, then still you will not lose the seat. मतलब आप MP और MLA हो, ठीक है, और आपको 2 साल से ज्यादा की लोअर कोर्ट ने सजा दे दी, तो भी 3 महीना का टाइम दिया जाता था कि आप जाओ हाई कोर्ट में अपील फाइल करो और सेंटेंस स्टे करवा दो इस 3 महीने के अंदर, तो फिर आपका एमपी एमएलए का सीट नहीं लूज होगा. ये जो टाइम लिमिट था उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने. मींस इफ यू आर फाउंड गिल्टी इन द लोअर कोर्ट, द मोमेंट यू आर फाउंड गिल्टी यू आर इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड. बट हाँ, ऑफ कोर्स द पनिशमेंट शुड बी मोर देन 2 years, और द पनिशमेंट इज व्हिच इज मेंशन्ड इन हियर, ये सारे में किसी एक में आ जाता हूं. देन ओके, इज इट क्लियर? सो ये लिली थॉमस केस भी बहुत फेमस है. आई होप दिस is clear. Yes or no? समझ में आया लिली थॉमस केस? ये न्यूज एक्चुअली मैंने जब पढ़ रहा था तो लिली थॉमस केस वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर्स. इज इट क्लियर? सो इन लोग को पर इंपैक्ट पड़ता. हाँ, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन नहीं था, द 3 months का स्कोप दिया जाता था. नाउ दैट 3 month scope is gone. The moment you are found guilty of an offense which is more than 2 years jail, then immediately you will be disqualified. ठीक है, that's the idea. हाँ, 138 amendment bill हम लोग ने डिस्कस कर लिया. So oppositions have raised this कि they are saying कि it is just only talking about custody, arrested, not proven guilty. अभी अदालत में प्रूव नहीं हुआ है. And they are saying, हाँ वही लिखा है, you are just talking about arrest, not for conviction. So it means it can be used by the government, and they are saying it that central agencies like CBI and ED will be misused, etc., against the opposition. That is what the opposition has said. Okay. Now the bill has been sent to Joint Parliamentary Committee. Abhi filhal, what is the current situation? It has been sent to a Joint Parliamentary Committee comprising of 31 members. Generally जो JPC होती है उसमें जितने लोकसभा members होते हैं वो डबल होते हैं राज्यसभा members के. मान लो यहाँ 10 होंगे तो यहाँ से 20 members जाएंगे, something like that roughly.
and currently a JPC is there, है ना? Jagdambika Pal is the chairman, है ना? And it's a type of ad hoc temporary parliamentary committees which comprises of Lok Sabha and Rajya Sabha members. हाँ, advisory body होती है, right? हाँ. So इसमें opposition के भी MPs होते हैं and they discuss. Main idea इनको ये होता है कि discuss करना है, evidence, experts, public policies, है ना? सारे लोग, कुछ लोग और को भी बुलाया जाता है, अपनी राय दीजिए, etc. है ना? So that is what the idea is. Even opposition MPs are also there. This is the famous one, Bofos, Harshad Mehta scam, Ketan Parekh 2G scam. Even recently we have seen VVIP chopper land acquisition, और एक बार वक्फ पे भी हुआ था, JPC में भेजा गया था ना. One nation one election has also been sent to JPC. ठीक है, यहाँ पे कमेटी चेयर कौन है आप देख सकते हो, है ना, उस टाइम पर. So this is just an advisory, of course it is an advisory body. तो पार्लियामेंट फाइनल होता है ना, जो डिसाइड करती है बिल पास करके whether the bill has to be passed or not, है ना. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो वही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि हम नहीं लॉ बना सकते. When the matter was challenged etc, we could not expand the scope of disqualification because it is the parliament who should make it, है ना. तो अगर आपको लगता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि yes, criminalization of politics is a serious thing, but that the laws regarding it should be made by the parliament, है ना. तो पार्लियामेंट, है ना, जुडिशरी कैनॉट लेजिस्लेट, पार्लियामेंट बिल बनाए ये इंश्योर करने के लिए कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से बचा जाए. एंड इट शुड इंश्योर, जो मेन प्रॉब्लम जो बताया ना वो यही है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ ए स्मॉल एमएलए, वन एमएलए हैज कमिटेड अ क्राइम और ही गेट्स अ बेल जस्ट सेइंग कि मैं तो अंडर ट्रायल हूं और 15-20 इयर्स तक केस चल रहा है, दिस एमएलए बिकम्स मच मोर पावरफुल. अब तो आप उसको पनिशमेंट दे भी नहीं सकते हो. So the main problem, yes, देखो ये प्रॉब्लम है. 46% of the newly elected Lok Sabha MPs have criminal charges. Charges मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल है देयर. अदरवाइज प्रूव हो जाता तो they would have been in jail, है ना. तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है. एक तो ये प्रॉब्लम है. दूसरा है कि कन्विक्शन रेट बहुत पुअर होता है, देखो, है ना. सो खासकर एमपी एमएलए के केस में आप देखोगे कई बस आईपीसी के अंदर 6% होता है, ईडी के अंदर तो हार्डली 1% है पॉलिटिशियन का. तो प्रॉब्लम ये भी है कि फाइनली प्रूव करना भी इट्स डिफिकल्ट. देयर आर टू केसेस. देखो कन्विक्शन रेट मतलब क्या, मान लीजिए 100 लोगों पर 100 एमपी एमएलए हैं, उन पर केस इनिशिएट हुआ, सो हार्डली 5 या 10 लोगों पे भी फाइनल प्रूवल कन्विक्शन नहीं होता है. 6% के आसपास है. Why? Because of course MP ministers are very powerful, so they can influence. Second thing is sometimes false cases are also filed. Okay, so these are some of the issues. लेकिन जो main problem क्या है? What is the solution? Solution lies here. Problem is here. 40% high court seats are vacant. Even in district judiciary there is a serious case, serious problem, है ना. तो lower judiciary में जो judges की vacancy है वो बहुत अच्छी खासी है. Huge vacancies there. Even in high courts there is a huge vacancy of judges that needs to be appointed. तभी नहीं जो 10-10, 15-15 साल केस चल रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है. This is problematic. That one case continues for 10, 15, 20, 30 years. So much so, you will be surprised to know. एक देखो, एक 72 years old case solve किया गया. There are many cases which are pending more than 30 years old. अब तो ये problematic है ना. So this is actually the main problem with the criminalization of politics. It is linked with the slow criminal justice system. ठीक है, अगर आप टाइम दोगे, स्लो में प्रॉब्लम होता है ना, 15-20 साल टाइम दोगे तब तक तो वो बहुत कुछ कर लेगा अगर इफ पर्सन इज अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन, है ना. सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर एक्चुअली. सो वी आर एंडिंग दिस क्लास हियर. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. एक इनके बारे में पढ़िएगा. आई वाज जस्ट reading few days back about Mr. Frank Caprio. थोड़ा सा पढ़िएगा क्लास के बाद, ठीक है. So we are ending this class here. Please subscribe to our channel, press the like button. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.